हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। लास्ट वीक वाज अ वेरी वॉलेटाइल सेशन। लास्ट वीक काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। पहले हमने देखा 14 अक्टूबर को ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद हमने देखा एक रेड कैंडल, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक डोजी एंड देन वी हैड अ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। एंड आफ्टर द ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन इमीडिएटली जो लोग थोड़े से नेगेटिव हो गए थे मार्केट के लिए, दे वे सरप्राइज टू सी दैट ये क्या हो गया, सडनली देयर इज अ पुल बैक। सो आई गेस आफ्टर दिस वोलाटिलिटी मैं पहले थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट शेयर करना चाहूंगा व्हाट इज हैपनिंग इन द हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स, बिकॉज जनरली क्या होता है कि लोग जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स करते हैं दे फॉरगेट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट्स। पहले उसके बारे में बात करूंगा। देन थोड़ा सा बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है। वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू जो है स्टॉक्स को लेके, बैंक निफ्टी को लेके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देन वील गो अहेड विद द डिफरेंट सेक्टर्स एंड स्टॉक्स टुडे, और काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं आज मेरे पास। सो आई शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड देन ऑब्वियसली एट द एंड जो मैं एक हमेशा एक छोटा सा मैसेज में शेयर करता हूँ अबाउट द ओवरऑल मार्केट, वो जरूर सुनिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो इफ यू जस्ट लुक एट द डेली चार्ट तो आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि यहाँ पे चॉपीनेस था, देन वी हैड अ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन एंड देन दिस इज नेगेटिव एंड देन वी हैव अ पुल बैक। ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। सो हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपको एनालिसिस करना है ना, पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, यानी कि फर्स्ट गो टू द हाईएस्ट टाइम फ्रेम फर्स्ट, देन गो टू द मिडल टाइम फ्रेम एंड देन द लोएस्ट टाइम फ्रेम। सो अगर मैं हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे जाऊं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा दैट द ट्रेंड इज अप and we have a sort of resistance due to the Fibonacci extension and we are seeing some selling. हालांकि ये जो कैंडल है मैं इसको ज्यादा सीरियसली इसके लिए नहीं लूंगा बिकॉज टुडे इज स्टिल 19th of October व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड ये अभी तक कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ। ये होगा एंड ऑफ द मंथ। सो एंड ऑफ द मंथ में एग्जैक्टली क्या कैंडल बनेगा, विल इट बी अ बिगर रेड कैंडल या यहाँ से पुल बैक आ जाएगा, हमको नहीं पता। बट हाँ, हमको इतना जरूर पता है कि हायर लेवल से थोड़ा सा सेलिंग आया है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखूं, इफ यू गो हियर एट द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, तो जो ट्रेंड है वो फिलहाल फ्लैट है। देयर इज नो ट्रेंड इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। बट द थिंग इज ऊपर से सेलिंग आया है, मार्केट हैज कम डाउन, ये सब मैं मानता हूं। बट अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखें, आई जस्ट जूम इन इफ यू वांट टू। इफ यू सी दिस कैंडल, ये कैंडल थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा एक हाई वेव कैंडल जैसे दिख रहा है। द शेप इज सिमिलर टू हाई वेव कैंडल। नाउ जनरली हाई वेव कैंडल्स का मतलब क्या होता है, देखिए हाई वेव कैंडल्स जब एक सपोर्ट पे बनता है आफ्टर अ सेल ऑफ, इट क्लियरली शोज दैट इट इज टायर्ड, यानी कि मार्केट थोड़ा सा टायर्ड है नीचे जाने के लिए। और ये जो पूरा जोन है दोस्तों, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है फॉर द निफ्टी फ्यूचर्स इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। और जनरली जो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे जो सपोर्ट होता है वो डेली चार्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो नाउ इफ यू कम टू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, यू विल अंडरस्टैंड कि ये ब्रेकडाउन हुआ जरूर है, बट ये ब्रेकडाउन के मुकाबले ये सपोर्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। दैट इज द रीजन वी सॉ दिस सडन पुल बैक ऑन फ्राइडे। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस लो भी है 24,837 या 830, जो भी आप बोले। सो दैट इज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ सपोर्ट। सो ओवरऑल मैं अगर सिर्फ निफ्टी की बात करूं तो आई थिंक वी आर जस्ट हैंगिंग ऑन टू सपोर्ट्स। वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग प्राइस, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ये सब हो रहा है। देयर इज नो ट्रेंड एट ऑल। सो एज अ निफ्टी ट्रेडर आई वुड लाइक टू ट्रेड एज लेस एज पॉसिबल। हाँ, अगर मुझे सडनली कुछ मंडे ट्यूसडे वेनेसडे के करीब अगर कुछ मुझे पॉजिटिविटी दिखी, then I will try to share with my new video series which I'm trying to come up, which is called the midweek analysis. I'm going to give it a shot. I'll try for 2 to 3 weeks. और अगर आप सब लोगों को वो पसंद आए, प्लीज लेट मी नो, देन आई विल कंटिन्यू विद द सेम। बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि सर अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हमको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो निफ्टी को अगर देखोगे तो यस इट इज एट अ सपोर्ट बट इट इज कंसोलिडेटिंग। बट जो मेन मैजिक है वो बैंक निफ्टी में हो रहा है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे और इमीडिएटली निफ्टी को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा। क्यों? सबसे पहले निफ्टी ये जो प्रीवियस लो के नीचे चला गया एंड देन इट हैज गिवन अ पुल बैक। बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ऊपर से नीचे आया है, बट दीज कपल ऑफ कैंडल्स आर लुकिंग फाइन। लाइक एक हैमर बन रहा है सपोर्ट पे, फिर एक बुलिश बेल्ट होल्ड, थिंग्स आर लुकिंग नाइस। बैंक निफ्टी हैज आल्सो गिवन अ प्रीटी डिसेंट
breakout in the hourly time frame charts, you can see this is a very good breakout. Even only the shape of the RSI is something which I do not like. 2 hourly charts अगर आप देखोगे, 2 hourly charts are slightly more better, and the most beautiful chart which I like is the daily and the weekly chart. So I feel there is some sort of upside momentum which is visible in the Bank Nifty till the time, I guess, till the time Bank Nifty 51,080 या 51,050 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, आई थिंक पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में रहेगी और यहां से हम ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, 5150 जो लेवल्स है उसके नीचे क्लोज अगर दे देती है बैंक निफ्टी, देन द पॉजिटिव व्यू जो मैं अभी शेयर कर रहा हूं वो नेगेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो बैंक निफ्टी है उसमें पहले अगर मैं पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करूं तो पीएसयू बैंक्स बहुत अलग लग रहे हैं। अगर आप देखोगे ट्रेंड फ्लैट है मंथली टाइम फ्रेम में, बट इट इज नियर अ सपोर्ट। इफ यू वॉच द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, ओवरऑल हम लोग ऊपर से काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, 19 to 20% इंडेक्स इज करेक्टेड। Only in the daily time frame chart, you can see this is the first pullback on 8th of October, then consolidation, and this on Friday again there is a sudden pullback. Now, अगर आप सब स्टॉक्स देखें PSU banking में, I'll just open the list in front of you. We have Bank of Baroda. You can see there's a big green candle. You can see Canara Bank, big green candle. मैं सिर्फ फ्राइडे की बात कर रहा हूँ. Central Bank, green candle, not a big green candle. It's you can say a sort of a long-legged doji or something, but a green. A hammer in Maharashtra Bank. Now, okay, PNB का कुछ खास नहीं है. SBI is the most bullish. Now, according to me, SBI, all the entire set of PSU banks are trying to get into the positive zone. So मेरे हिसाब से अगर SBI 830 के ऊपर ट्रेड करने लगे, ध्यान से सुनिए, 830, 832 के ऊपर ट्रेड करने लगे, सस्टेन करने लगे, एंड इफ इट क्लोजेस, क्लोजिंग बेसिस बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक गैप है, ये देखिए, दिस इज अ गैप, तो दिस गैप नीड्स टू बी नेगेटेड, यानी कि इसके ऊपर अगर एक पॉजिटिव बिग ग्रीन कैंडल क्लोज देता है, देन देयर इज अ डिसेंट चांस दैट SBI could see some momentum on the upside, and I'm talking with a viewpoint of a medium term trader. But मैं एक ऐसा ट्रेडर नहीं हूं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर सेक्टर ने ब्रेकआउट दे दिया, देन आई गो एंड इन्वेस्ट ऑल माय मनी ओवर देयर. नो, व्हाई? हाँ, मैं मानता हूं कि एसबीआई एक लीडर है अपने पर्टिकुलर सेक्टर में, बट क्या एसबीआई के साथ दूसरे स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं? मैं उनके लिए वेट करूंगा. आई जनरली डू नॉट ट्राई टू वेंचर एंड ट्राई टू गेट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक एज फास्ट एज पॉसिबल. मैं ये जरूर देखूंगा कि दूसरे स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं. अगर वो करेंगे, then maybe my thought process will change for PSU banking pack. अगर मैं प्राइवेट बैंकिंग पैक के बारे में बात करूं, देखिए, इफ आई टॉक अबाउट द प्राइवेट बैंकिंग पैक, पहले हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे प्राइवेट बैंकिंग के. सो प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स इज स्लाइटली मोर पॉजिटिव. यू कैन सी ओवर हियर, ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, दैट private banking pack has been, getting support from a support band which has been into existence since many months. This is the first time when we saw an influx on the upside. This is the second time which was of a very high momentum. This is the third time. Momentum is low, but momentum can always catch up later on, as far as the lower support is not taken off on the downside. So obviously यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने कंटिन्यूसली लास्ट कुछ वीडियोस में ट्विटर हैंडल पे भी मैंने शेयर किया था. फर्स्ट था कोटक बैंक. तो कोटक बैंक, आई थिंक इट हैज डन इट्स वर्क एज अ स्विंग ट्रेडर, मैंने बोला था. तो अगर आप कोटक बैंक का हाल टाइम फ्रेम चार्ट वगैरह देखते हो तो इट हैज डन इट्स बिट वर्क व्हाट इज नेसेसरी. इट वेंट अप, इट रैलीड प्रीटी नाइसली. अगर हम HDFC बैंक को देखें, HDFC बैंक, इट हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग अप. इट हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग अप. आई थिंक as far as HDFC Bank doesn't close below 1620 or 1610, the moment it closes below 1620 या 1610, I think the positive view will be negated. But जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है HDFC Bank, there is a decent chance that there is some positivity in the stock. हालांकि एक चीज समझिए, that results I think आने वाले हैं. Results are out, I think so. बट कभी कभार आपने देखा होगा कि रिजल्ट सीजन में अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, that doesn't matter, but how the price reacts is the most important thing. तो ये मंडे को कैसे रिएक्ट करेगा वो मेरे हाथों में नहीं है. That I cannot predict. That is completely on the market, how market participants are
absorbing the result and how the price moves. But my levels are very, very clear. If it closes below 1610, positive view will be negated. If the that particular level is not taken off, then there will be chances that the stock will try to go higher. Now, if you have a look at ICICI Bank has just given a breakout on Friday. और results अभी आने बाकी हैं. I think the results are on 25th. So if we are maybe in good luck or whatever you say, then this rally can continue on the upside. It is as simple as that. Even ICICI Bank is looking pretty decent right now. Okay. Now, Energy Pack, I think so. What I can say is the trend is up in the monthly time frame chart. Even in the weekly time frame chart, the trend is flat and there is no momentum. The momentum is weak and it's looking on the downside. Momentum नीचे की तरफ है, trend ऊपर है. So I guess in this particular sector, there are only two stocks which are looking slightly stronger than other stocks. One is Hindustan Petroleum. It is looking slightly stronger than all other stocks in its list. And the second one is BPCL. HPCL and BPCL दोनों stocks हैं. Especially HPCL is more stronger. BPCL is okay, it's more sideways. But these two stocks are more stronger than all other stocks in this sector. Now, Reliance Industries, I think the way it is trading right now, I think some sort of cool off is possible. थोड़ा सा consolidation, थोड़ा सा pullback ऊपर की तरफ दिखेगा. The momentum is down. Okay, the momentum is down. The trend is also down. But now it seems थोड़ा सा pullback दिख सकता है Reliance Industries में. Metal Pack, I think so. Overall, it's looking strong in the monthly time frame chart, weekly time frame chart. Things are completely fine. Daily time frame chart में थोड़ा सा consolidation हो रहा था, but the pullback which has been visible to me on 18th of October is phenomenal, and it is a one-way pullback. This is really, really strong. So there are a couple of stocks. First जो stock मैं आपके साथ share करूंगा, that is Hindalco. Hindalco is one of the stocks which I think swing traders should keep watch on, because the way it has broke out, especially in the 2-hourly time frame chart, and yes, it should sustain about 756, 757. Then I think the momentum will continue on the upside, but it is one of the strongest stocks right now in the metal pack. And अगर दूसरा stock अगर आप देखना चाहें, then it is JSW Steel. JSW Steel आपको डेली चार्ट में उतना पसंद नहीं आएगा, वीकली चार्ट में ठीक ठाक है. But if you have a look at the hourly time frame chart, 2-hourly time frame chart, the way it has given a pullback, it's pretty nice. But yes, now breakout अभी तक इसमें नहीं आया. अगर breakout इसमें आता है in the shorter term time frame charts, then momentum traders, swing traders should keep a watch on this stock. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now Autopack, I think what has happened in Bajaj Auto before few days, the way Bajaj Auto collapsed 9%. So obviously the psychology in this particular sector has been slightly on the negative side, or it's not as strong. तो मैं as of now के लिए थोड़ा सा मैं at least for few days or at least for a week, I would like to avoid Autopack. थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे मार्केट क्या करता है, उसके बाद में डिसीजन लेते हैं. Let's see what price action is visible to us in this sector. उसके बाद में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ठीक है. Okay. Now, finance pack is something where you need to pay your attention. All of you, all short-term traders, swing traders, क्यों? The reason for that is finance is one pack which is one of the stronger sectors. I'm not talking the strongest, but one of the stronger sectors. And what is happening over here is it's in an uptrend. You can see even as per Dow theory, it's making higher highs, higher lows. Even over here, अगर आप देखोगे तो lower जो low है, इसको तोड़ा नहीं है. And it's trying to revamp and it's trying to go on the upside. So in fact, अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे फाइनेंस पैक में, तो फाइनेंस पैक में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे. आई थिंक बजाज फिनसर्व, Bajaj Finance, you can say all of these stocks are in an uptrend and they have corrected recently. Chola Finance, then you will see also maybe SBI Card, maybe SBI Life. All these stocks, if you just have a look, then you will see decent opportunities in this stock as a short-term swing trader. तो ये सब stocks को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. But again, I would like to say that it's not that just because it's a good stock ऊपर से correct हुआ है तो मैं इसको immediately purchase कर लूंगा. No,
इट हैज करेक्टेड बट इट कैन करेक्ट मोर, ये और ज्यादा करेक्ट हो सकता है. सो हाउ विल यू वैलिडेट, आप वैलिडेट कैसे करोगे वेदर इट इज अ बाय और नॉट. अगर ये स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको ब्रेकआउट देता है, then maybe you will have the validation that now the momentum is changing. Now the trend shorter term time frame में जो डाउन ट्रेंड हो गया था वो भी अपसाइड जाएगा, and then you will see some sort of decent momentum, smooth ride on the upside. ठीक है. So there are many stocks in the finance pack which you can keep your eyes on. Consumption pack, I think trend is up, momentum is positive, but I think एक चीज मैं जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. यहाँ पे जो भी पुल बैक आएगा मोमेंटम कंजम्पशन पैक में, इट शुड कम एज फास्ट एज पॉसिबल. इफ इट डजंट कम वेरी फास्ट देन थिंग्स मे नॉट वर्क द वे दे शुड बी वर्किंग. ओके, देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. नंबर 1 इज एशियन पेंट. ठीक है, ये स्टॉक ऊपर से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, थोड़ा ज्यादा नीचे आ चुका है. थोड़ा कम नीचे आता तो अच्छा रहता, बिकॉज आई ऑलवेज प्रिफर stocks which have retraced less because they are more strong. If you have a look in the monthly time frame chart, you may not like, but in the daily time frame chart, in the weekly time frame chart, things are okay. Second one is Berger Paints. Now, if you say that which one is better, then I think Berger Paint is slightly more better in comparison to Asian Paints as of now. But again, this is not a stock to directly, if I'm saying it's a good stock, we will go and buy. No, they have to perform. They have to give a breakout. Because you can see over here, यहाँ पे भी stock, ये देखिए यहाँ पे भी stock ऊपर से नीचे आए, or maybe over here ऊपर से नीचे, and then this kept on correcting. So if you just buy on a dip, it will make no sense. They'll keep on correcting. So after a dip, they have to give a breakout in the shorter term time frame charts, hourly time frame chart, 2 hourly time frame charts. They have to give a breakout. Only then it will make sense, and only then you will be able to see some profits in your trading account. FMCG also is one sector which has corrected a lot. ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, ये मैं वापस आपके साथ शेयर करता हूँ. ये देखिए, it is at a very strong support band. You can see these arrows which I have just shared over here. You can see a hammer. So basically अगर आप यहाँ पे 2 या 3 स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एक है आईटीसी. आईटीसी हैज करेक्टेड प्रीटी नाइसली. इट इज विजिबल दैट इट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीवियस लो. सेकेंड वन इज हिंद यूनिलीवर, Hindustan Unilever. Okay, this one is also looking pretty nice. It has corrected pretty much. Okay, and now it is available at a cheaper rate. Only thing is it needs to rally. If it doesn't starts rallying, if it keeps on correcting, if it keeps on consolidating, कोई फायदा नहीं है स्टॉक का, कोई फायदा. बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम हुआ था, अप ट्रेंड में थे, रिट्रेस हुए, and then what happened? They kept on correcting. What is the point? What is the point to look at a stock when the stock is correcting, right? After a correct, the stock has to start performing on the upside. ये आप जरूर ध्यान रखिएगा. इंफ्रा पैक, आई शुड से एक ही स्टॉक मुझे पसंद है, एंड दैट इज भारती एयरटेल. भारती एयरटेल इज वन स्टॉक, इफ यू सी दैट it has been able to bounce back from its previous high over here, swing high, and it's now trying to go higher. So as a momentum trader, as a swing trader, you can keep your eyes on Bharti Airtel. Okay, even in the weekly and even in the daily, in the monthly time frame charts, the trend is up. Yes, there was a negative candle, but in the daily time frame charts, in the hourly time frame charts, I think momentum is a little bit more on the stronger side. IT pack. अगर आईटी पैक के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए. दो चीजें. नंबर 1 इज यू सी द वे दिस कंसोलिडेशन इज हैपनिंग sideways. 1 2 3 4 5 6 7 वीकली कैंडल्स इन अ रो sideways. ठीक है. अगर यहां पे हम देखें कंटिन्यूस कंसोलिडेशन, सी दिस आरएसआई. ऐसा कभी आरएसआई आपने देखा है? पूरा साइडवेज, वरना आरएसआई कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होते रहता है. So as a sector, I want to avoid. I had many stocks. मैंने काफी stocks निकाल के रखे थे. In fact, अभी भी हैं मेरे पास. But there are many other sectors which are looking slightly more positive. So थोड़ा सा मेरा ध्यान इस sector से हट चुका है. Yes, I'll keep the sector in watch. In case if something changes, the state of trend changes, then I'll try to share with all of you in my next video.
Pharma pack, I think things are okay. The momentum is not very, very strong, but I think it's not very bad also. One stock which I like from the pharma pack is certainly Apollo Hospitals right now. Okay. So if you look at the stock right now, the way it is trying to move up. Yes, I can understand last 3 days there is a lack of momentum, but if it tries to catch up and if it surpasses this particular level, the recent high which is at 7149 or 7150, then I think we are in a good chance that we will see some higher levels in the stock. PSE सेक्टर मेरे हिसाब से मैं इसको completely avoid करूंगा because the reason is the trend is down in the daily time frame chart, the trend is flat in the weekly time frame chart, and the trend is up in the monthly time frame chart, but you cannot see any positivity in any of the time frame charts. So I think overall PSE sector is slightly weaker right now, तो थोड़ा सा मैं उसको avoid करना चाहूंगा. Even the realty pack, I would suggest that there is no fixed trend. If you see, it's making lower lows, lower highs in the daily time frame charts. Sort of not exactly lower lows, but lower high to इसने जरूर बनाया. This is the previous high over here. I'll just try to zoom in once for you. This is the previous high, then this is the next high. This is the previous low. You can see one low over here. So the lows are higher and the highs are lower. So it is more of पूरा consolidation zone में जा रहा है. And generally you would not want to trade a particular sector or a stock which is consolidating. Mid caps के बारे में अगर मैं बोलूं तो mid caps में momentum है, ट्रेंड भी है ऊपर की तरफ in the weekly time frame chart. In the daily time frame chart, I think little bit consolidation is going on. If this consolidation takes care that ये previous low ना टूटे और ये वाला high टूट जाए, then you will be able to see some momentum in the market. Now, before I give my last message, an important message which all of you wait for, once again, thanks to all of you. Why? Sharing all of your valuable comments with me in the video, in the comment section below my video. पहले भी आपको बोला है मैंने, वापस आज बोल रहा हूँ कि आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा, you can say they motivate me to make good videos for all of you, so they are helpful for all of you. इस वीडियो में भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है मार्केट व्यू समझाने में, मार्केट व्यू के ऊपर थोड़ा सा लाइट डालने में, प्लीज शेयर योर कमेंट्स विथ मी बिकॉज आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, योर कमेंट्स मोटिवेट मी टू मेक गुड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, नाउ द टाइम फॉर द लास्ट मैसेज. लास्ट मैसेज में इतना ही बोलूंगा दैट सी वन थिंग इज, अभी रिसेंटली लॉट साइज चेंज हुआ है. आई थिंक कल या आज ही शायद मैसेज आया है, लॉट साइजेस चेंज हुए हैं अबाउट द इंडेक्स डेरिवेटिव. सेकेंडली, बीच में ऑप्शंस के कुछ रूल्स चेंज हुए थे. यू कैन सी FIIs आर कंटिन्यूसली सेलिंग, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो बाइंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. War scenario is also going on. I don't know how much that war is going to affect us, but crude जो है, okay, crude is looking weak. If you just have a look at the NYMEX crude, it's trading on the downside. The moment it closes below 69, it will be weak. Now the problem is in dollar index. Dollar index has shot up too much. Now today is the first day where I'm seeing dollar index on the downside. The more it corrects, because it is at a 61.80% Fibonacci retracement, the more this corrects, the more Nifty goes higher. आपको ज्यादा से ज्यादा confirmation आते जाएगा धीरे धीरे. ऐसे सिनेरियो में जब भी इंडेक्स एक बहुत बड़े सपोर्ट पे है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट द मार्केट कैन गो अप, आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स भी दिख रहे हैं, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि एक साथ में मैं अभी समझो कि सडनली सब में ब्रेकआउट आ जाए. सडनली आपके स्टॉक्स में या मैंने जो स्टॉक्स शेयर किए, कभी भी सडनली एक साथ में सब स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए. एज अ ट्रेडर आई वुड से मे बी फॉर माई सेल्फ आई विल लाइक टू ट्रेड मे बी 1 or 2 स्टॉक्स, मैक्सिमम 3, एंड देन आई विल वेट. देखूंगा मार्केट क्या करती है, क्या मार्केट पार्टिसिपेट करती है. अगर पॉजिटिव में भी क्लोज होती है तो क्या दूसरे दिन पॉजिटिव ओपन होती है, और इट वाज जस्ट वन डे पॉजिटिव मूवमेंट एंड सडनली दूसरे दिन नीचे आ जाती, क्या होता है. इफ द रैली कंटिन्यूज कंसिस्टेंटली, देन प्रोबेबली आई विल गेट माय फर्स्ट टारगेट इन द स्टॉक्स व्हिच आई हैव होल्ड ऑन. जो मैंने लिए थे 3 स्टॉक्स, उसमें से मुझे अगर 2 या 3 में प्रॉफिट आता है, 1 या 2 में भी आता है, देन प्रोबेबली आई विल गो टू द नेक्स्ट 4th and the 5th stock. Otherwise, I will wait. Never ever try to park your entire money
immediately in the market just because the market is at a big support, because वहां पे मोमेंटम भी आना चाहिए। और हमेशा याद रखना, supports and resistances are temporary in nature, they are not permanent, they can be broken, they are strong, they will help you, but they can be broken. So you should not test the fire, you should not taste the poison. Let the market, let the price tell you that I'm ready to go up and then participate more. ठीक है? So I hope आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा. Trade less but trade wisely. Thank you.